क्योंकि सेकंड ट्रायल में बहुत हेल्प की थी। drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. Rookwood Castle तो हम लोग जा चुके हैं already. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Finally. शायद अब हमारी दोस्ती हो जाए इनसे। अरे नहीं, शायद दोस्ती करना चाहती हैं। इस ड्राइवर की छाती पर क्या हो रखा है इनके? ओह अच्छा, लेके जाने लगी है तो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ बेहतरीन जरूर कर रहे होंगे। मैं स्कार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हॉगवर्ट्स लेगेसी के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हमारी मुलाकात फाइनली दोबारा फिर से लॉर्ड गॉग जी से होती है और उनके थ्रू हमें पता लगता है कि उन्होंने रैनरॉक एक बहुत बड़ी ड्रिल मशीन बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी मदद से वो कुछ ढूंढ रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो सब कुछ जानता है कि एंशिएंट मैजिक क्या चीज़ है, और जो उसके 4 कीपर्स हैं जिनमें कि जादूगर एक्हैम, आपके जादूगर रुकवुड, जादूगर फिट्जगेराल्ड और मेरे ख्याल चौथे जादूगर का नाम बकार है, ऐसा कुछ नाम है। इन सब के बारे में जानता है और वो एंशिएंट मैजिक के बारे में पूरी तरह जानता है, और शायद इस बड़ी ड्रिल मशीन के जरिए वो हमसे पहले एंशिएंट मैजिक को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लॉर्ड गॉग जी जाते जाते हमसे ये वादा भी करते हैं कि वो जो भी चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा है, वो जो भी कर रहा है, उसके बारे में वो पता लगाएंगे और हमें बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों, हम लोग ड्रैगन से हमारी दूसरी मुलाकात होती है। हम लोग उनसे मिलने इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें उनका अंडा उन्हें वापस लौटाना था। अंडा हम उन्हें वापस लौटा देते हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है हमारी और पॉपी की इस ड्रैगन से बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है, और शायद ये दोस्ती हमें हॉगवर्ट्स लेगेसी की कहानी में आगे ज़रूर मदद करेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड शुरू करते हैं और देखते हैं कि हॉगवर्ट्स लेगेसी की कहानी में अब आगे क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आज के एपिसोड में दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग कुछ साइड असाइनमेंट्स करने वाले हैं, क्योंकि तभी मैं जो मेन क्वेस्ट, मेन स्टोरी है उसमें आगे बढ़ पाऊंगा। कि जो हमारा अगला मेन स्टोरी का जो क्वेस्ट है वो है इन द शैडो ऑफ द माइंड, जिसमें शायद हमें सेबेस्टियन से मिलना है। हाँ, सेबेस्टियन से मिलना है। ठीक है, तो इससे पहले मुझे ये करना होगा, मैं बताता हूँ आपको। ये जो असाइनमेंट है प्रोफेसर गालिक जी का असाइनमेंट है और मैडम कोगावा जी का असाइनमेंट है। चलिए पहले मैडम कोगावा जी का असाइनमेंट करते हैं। इसमें क्या करना है? मैडम कोगावा वांट्स मी टू प्रैक्टिस फ्लाइंग ऑन माई ब्रूम नियर कीन ब्रिज टावर along the water to the south of Hogwarts. She also wants me to fly around the spires in the mountains to the southwest. चलिए शुरू करते हैं। ये 2 असाइनमेंट्स करने के बाद मेरा लेवल डेफिनेटली 22 पहुंच ही जाएगा गाइज, और उसके बाद फिर हम लोग मेन क्वेस्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। ओ भाई, ऊपर पहाड़ों पे, हो सही यार, ये पहाड़ों के पार है ये शायद। ठीक है, देखते हैं। नहीं, हम पहुंचने वाले हैं, यहीं पे ये सामने ही लोकेशन है। सही है। 1 मिनट, अगर इन गुब्बारों को फोड़ना है। हाँ, मुझे ऐसे 5 गुब्बारे फोड़ने गाइस। ओके ओके ओके, दो 3 हो गए, एक यहाँ पर भी था हो रहा। बढ़िया, लास्ट है। बच गया। मैं बोलूँ कि क्या करना है समझ नहीं आ रहा था, फिर समझ में आ गया अच्छा इन गुब्बारों को फोड़ना है यहाँ पे। सही है, डन।
ठीक है, प्रैक्टिस फ्लाइंग नियर कीन ब्रिज टावर। ठीक है, एक मिनट, मैं सोच रहा हूँ यहाँ के जो ये बीस्ट है ना, इनको मार देता हूँ, इसमें स्पाइडर फैंग्स और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, एक मिनट, मुझे बम्बार्डा ले लेते हैं यहाँ पे। अरे अटक मत भाई, अटक मत। आपकी भी सेवा करते हैं, किधर है ये? बढ़िया। ओह, एक और बड़ा है यहाँ पे, आराम से। ठीक है, ओह एक और यहाँ पे कहीं है। नाइस। बढ़िया। ठीक है, ये रहा एक। ओके, ओह दिस इज अ बिग वन। निपटा देते इसे। ओह, उसकी तो बुरी हालत हो गई। बढ़िया। एक और है, किधर है? ये चलिए, निपट गए लोग। There's a victory that came none too soon. ओके, चलिए अब नेक्स्ट लोकेशन चलते हैं और फिर वहाँ पे हमें पूरा इन गुब्बारों को फोड़ना होगा। मिस कोगावा के भी मिशन से ना कुछ हमें स्पेल वगैरह मिलने वाला है। सही है। वहां पे क्या है? कुछ खास नहीं है। चलिए चलते हैं फटाफट। यहाँ पर भी हमें वही गुब्बारे फोड़ने हैं फटाफट से। ये रहे नीचे, मैं फोड़ना शुरू कर देता हूँ। आई क्या मजाक है ब्रो, फोड़ना। एक एक गया पूरा। चलिए ये भी गया। बढ़िया। मिस कर दिया। कोई नहीं, इसको आते हुए फोड़ते हैं। पहले इसे फोड़ देते हैं। ठीक है, लास्ट है अब सीधा। इसके बाद हमें जाना है कुगावा जी के पास। That's it. डोंट मैडम कुगावा। ठीक है, फटाफट से चलते हैं। चलिए। Welcome back. Have you finished your assignments? Yes, ma'am. Reporting back, Professor. Assignments all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say, and you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Okay. Precise, deliberate movements. ठीक है, भाग ले भाई जल्दी। यस, रेस्ट मोमेंटम।
न्यू स्पेल अनलॉक्ड है, तो ये स्पेल ही है। एक मिनट देखते हैं। अच्छा, this moment shows the motion of enemies, slows the motion of enemies and objects. The larger the target, the less effect. अच्छा ठीक है, spell will have on it. Very good. Rest momentum, rest momentum. ये रहा, ठीक है। I recommend practicing your new spell as much as possible, perhaps before you leave here. Arrest the momentum. That's it. Keep it up. चलिए, लेवल 21 भी हमारा होने वाला है। बस मुझे लगता है प्रोफेसर गार्लिक का जो मिशन असाइनमेंट कर लेंगे ना, हो जाएगा। चलिए गाइस, एक काम करते हैं, जब तक हमारे पास प्रॉपर फंड्स नहीं आते ना, मैं साइड मिशंस कर रहा हूँ। और इसमें लाइक पॉपी वाला मिशन आ रखा है कि भाई, अगर आप लोगों को याद होगा लास्ट एपिसोड में हम लोग ने जैसे ही वो लाइक अंडा वापस किया था, तो वो एकदम डर गई थी। मुझे लगता है शायद उसकी जो ग्रैंड माँ है ना, वो कुछ दिक्कत में है और हमें उसी के लिए इससे बात करनी है। चलिए चलते हैं, पॉपी से शायद यहीं पे, हाँ यहीं खड़ी है वो। Slow down now. There we go. I should dismount here. थिंक हमें सुबह कर दिए होंगे शायद। हाँ, Oh, good, you're safe. चलिए बात कर लेते हैं। There you are. You were in such a state when you left. The poachers got to my gran. Someone recognized me in Horntail Hall and they got to her. What do you mean? Is she all right? She's fine, thank goodness. But they were at her house, our house. They assumed I'd sent the egg there. अच्छा, वो एग, She said they took the whole place apart looking for it, screaming that we'd cost them everything. ठीक है। I'm sorry, Poppy. I'm glad she's all right. I don't think either one of us could have anticipated that. I should have known. I underestimated the poachers. And now another creature's in danger. What do you mean? The poachers refused to leave empty-handed, so they took valuable journals that Gran had discovered when she was researching rare creatures. ठीक है। One of them contained theories about a secret hiding place of the Snidget, long thought to be extinct. Snidget? अच्छा, what is a Snidget, man? Exactly what kind of creature is a Snidget? It's a small bird with golden feathers. It's incredible. It has rotational wings that allow it to dart quickly in any direction. ठीक है। In fact, the golden snitch in Quidditch is based on the Snidget, which barbarically was actually used in the sport hundreds of years ago. अच्छा, इस Snidget को यूज करते थे पहले। ओहो, फिर बाद में उन्होंने वो I take it you aren't going to let the poachers anywhere near the Snidgets. Gran wants me to stay out of it, but I know she's devastated that poachers might go after the Snidgets, if they still exist. शायद हमें उन्हें बचाना होगा। of surprise on our side when we save that dragon, but the poachers will be watching for us now. ठीक We है। need allies. Others who hate the poachers enough to help us. Who value creatures as much Merlin's beard! You're a genius! The centaurs! Centaurs! They'd want the Snidgets protected at all ओ costs. तेरी, हम लोग सेंटोर्स की मदद लेने वाले हैं। Let's talk to the Sounds centaurs. as if we need to go and talk to the centaurs. We'll need to be careful in how we approach them. Tensions with them are high. Still, I think they may be our only hope. Let me think on it. I'll let you know as soon as I have a plan. ठीक है। ओ भाई साहब, गजब यार। I hate to see a creature get put down like that. ओके, मुझे एक चीज़ देखना है। शायद मेरे लेवल बढ़ गया होगा यार, अब लेवल 21। अरे यार, थोड़ा सा रह गया है। जब एक मिनट हो जाए ना, तो फिर अपन लोग आगे जा सकते हैं। ठीक है, हमें कुछ साइड क्वेस्ट और करने होंगे गाइस। लेट मी चेक। प्रोफेसर गार्लिक वाला असाइनमेंट अभी हम कर नहीं सकते। इन द शैडो ऑफ द ब्लड लाइन, चलिए ये कर लेते हैं। इसमें मैप पे कहाँ जाना है हमें? हॉगवर्ट्स में ही है ये तो। और ठीक है, यहाँ पर है। बढ़िया, चलते हैं। Sure, are we? ठीक है, एक मिनट पहले मैं Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Anything to do with Salazar Slytherin is worth the risk. I can't agree. And I'll not say a word more. I'm sorry. क्या दिक्कत हो गई I इनकी? won't give up. ठीक है, सेबेस्टियन से बात कर लेते हैं। What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts.
so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. Scriptorium? The dark arts are dangerous. Oh भाई dark arts तो नहीं सीखने वाले हम लोग. Ominous is right. Meddling in the dark arts is dangerous. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it, if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? ओ इससे बहुत दर्द होता है शायद मुझे पता है. एक बार मना करते हैं. What does the Cruciatus curse do? हाँ जानते It's हैं. known as the torture curse. Crucio. Crucio. It inflicts intense, excruciating pain Pain on the victim. हाँ सही में. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. ठीक As है. punishment, his family cast it on him. Oh. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. He had no choice. How horrible. Poor Ominous, he was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. ठीक है गाइस, हमें बस सेबेस्टियन के पास जाना है. उसका हमें ना उसने बोला था ना कि हमसे वो दोबारा बात करेगा, तो वो आ चुका है. वो बात करना चाहता है. पता नहीं हम लोग इस मुलाकात में हम लोग का डार्क मैजिक सीख पाएंगे क्या? आई डोंट थिंक सो, बट चलिए देखते हैं क्या होता है. ठीक है, यहाँ बात करनी है उनसे. चलिए. You're here. Brilliant. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. चलिए, अब ओमिनस से बात करनी है हमें. It's this way. Which way, brother? Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. There he is. Good luck. कहाँ जाए? यहीं पे है क्या? अच्छा वो रहा. और हम लोग शायद आए भी स्लिदरिन हाउस में. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? Please, Ominous. I confided in you before about what happened with the Undercroft. Sebastian simply wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about... What was it? Scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favourite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. पर एक बार जाके देखना तो चाहिए ना, वही तो बात है. Convinced my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished.
No one else ever tried to enter. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? वही मैं बोल Aunt रहा हूँ Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it Do together. it together, हाँ सही रहेगा ना. I see what you've done here, and I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. Sebastian यही तो I रहा. hope we don't regret this. Sebastian, over here. चलो आ गया वो भी. These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, 3 heads are better than 1. It's 2 heads are better than 1. And by that logic, 3 is better than 2. Simple mathematics, Ominous. Revelio. Remember, 3 braziers are involved. Braziers are involved. मुझे लग रहा है ये है ना जो ये Was चीज. actually listening. I do that. Occasionally. इसका कुछ फंडा है जरूर. ठीक है, एक यहाँ पर है और 2 ये रहे. Revelio. क्या हो सकता है, क्या करना होगा इनके साथ. ठीक है, पहले इसे चलाते हैं. Confringo. हाँ कुछ खुला. Things happening. I hope we're ready for this. We are. ठीक है, 1 मिनट भाई स्पेल्स अपने डाल लेता हूँ क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वो स्लिदरिन हाउस का ही जगह है. कुछ भी हो सकता है अपने साथ. ओ भाई. Revelio. Around. I must prove my point. We do not need to use the dark arts as my family instructs. When I reach the scriptorium, I will find evidence that there is more to Salazar Slytherin than we realize. I have returned to my brother. He now knows how I access the corridor's entrance and that there is no straight path to reach the scriptorium. It's a maze with many challenges to solve. I hope that my brother will follow my lead and we can study our ancestors' legacy together. Noctua Gaunt. ये उसकी आंटी है ये. Entry. Signed by Noctua Gaunt. लोगों मुझे रिपेयर करना पड़ेगा इसे. Parents! Ominous! Your family was here. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. Okay. ठीक है, अब मुझे इससे बात करनी है शायद. Ominous. The voice is ancient. You hear a voice. It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Oh. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd Okay. like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. Believe me, I am having thoughts, but I'm still convinced we should, We should go ahead. हाँ वही तो. It's जब ironic. इतना तक यहाँ तक आए हैं When I तो. left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. ठीक है. I can't believe I'm doing this. Parcel tongue. Oh, खुल गया गेट. You possess a rare ability indeed. Between the 2 of you, I'm starting to feel left out. Between the 2 of us, Never mind. There's no clear way forward. Revelio. like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult. Confringo. The door we came from, it Revelio. closed. And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate. Confringo. शायद दीवार के उस तरफ है.
कुछ हुआ था यहाँ पे। Brazier. When the door closed, it lit up. Revelio. Confringo. Slytherin lock है। Dial requires focus. Use L to rotate the top dial and R to rotate the bottom. Solve it. ओ भाई Sound good. कार्ड भी लेता है। शिट। Slytherin didn't make this easy. ठीक है ठीक है ठीक है। क्या मिलाना होगा मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा स्नेक, This is looking rather ठीक है dire. शायद स्नेक मिलाना है, ऐसा कुछ है। Don't surprise. We're in a maze designed by Salazar Slytherin. कमान जल्दी इसके पलटने से पहले। अब खुलना चाहिए। All the gates have symbols. All the There are gates have symbols symbols. on the dial. ठीक है। All the gates have symbols. ओ इससे मेरी हेल्थ भी खत्म हो रही थी भाई, बच गया। All the gates have symbols. I need to check the symbols, man. ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे क्या है? Salazar Slytherin buried this scriptorium deep within Hogwarts. I'm afraid I shall lose my way around these dark corridors. I'm a descendant and yet I feel unwelcome. Lightening these braziers in the corridor is helping. I shan't lose heart. Challenge by challenge, I will make my way through. ठीक है? This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Poor Aunt Noctua. बोलते गेट पे कुछ साइंस बने हुए हैं, but I don't able to see any signs, man. और यहाँ पर कुछ बना हुआ है। एक मिनट यार, मुझे ना मेरा एक बेसिक मैजिक स्पेल था लूमोस, ये चाहिए। Lumos. ये देखो ना, नीचे कुछ Z टाइप है, ऊपर कुछ ये जानवर टाइप है। ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं है ना, यहाँ कुछ नहीं है। और ये नहीं, ये सांप काट रहा है यार, मेरी हीलिंग खत्म कर रहा है भाई। हाँ ये था, और ये Z टाइप। ओ हाँ खुल गया, यही था। ओह डरा दिया भाई। ठीक है। Matching the symbols did open it. Was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. Revelio. ठीक है। Extraordinary. This journey is painful but rewarding. I shall soon find the scriptorium and discover untold secrets regarding our house founder. Salazar Slytherin intended more than what we have become. I know it. हाँ ठीक है। We've got more to solve ahead. और यहाँ पे और वो थे ना, Corridor. It may not be Rebellion. obvious which leads where. और यहाँ पर भी एक लॉक है, और यहाँ पे क्या है? Lumos. एक चांद टाइप है और एक सांप है। ठीक है, Another gate. चांद Seems Slytherin और like सांप to है। play games. Must run in the family. ठीक है, ये भी गेट Look खुल in गया। the mirror, Sebastian. पता नहीं कहाँ जा रहे हैं भाई। That's अच्छा। sounded promising. Another dial solved. Impressive. एक Nice हम work. यहाँ पर भी आए थे ना, यहाँ क्या था? यहाँ पर भी एक गेट है, 3 गेट, अभी 2 गेट हो गए। ठीक है, एक ये गेट भी, इसे भी खोलना पड़ेगा हमें शायद। यहाँ पर साइन है, बट इसका सांप है किधर? ओके यहाँ पर तो नहीं है भाई इसका। ठीक है, मुझे लगता है उस दरवाजे में कुछ है शायद, यहाँ जाना पड़ेगा। Another welcoming sort, was he? ओहो, अब मुझे काटेगा, मैं वो साइन देख के नहीं आया। चलो अब इससे कटवा लेते हैं एक बार। Every dial seems to be getting more difficult. Confringo. You've made it this far. Don't give up. नहीं हमने गिव अप, हमने कुछ नहीं किया। मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे ना कुछ सिंबल्स थे, वो मुझे देखने पड़ेंगे। Lumos. बस स्लिदरिन हाउस खतरनाक है यार भाई, कसम से। यहाँ पे ठीक है, एक मछली है और नीचे ट्रायंगल सॉर्ट ऑफ कुछ है। ऊपर मछली है, बस मुझे याद रखना पड़ेगा, ऊपर मछली और नीचे ट्रायंगल।
और मछली 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 ये रही और नीचे ट्रायंगल है। चलिए ये भी खुल गया। ये लास्ट गेट लग रहा है गाइस मुझे। We're another step closer to the scriptorium. I feel the dial and it struck my face as if it were a real serpent. But I must find a way forward for my family's sake. We should not require children to conform to old traditions. The scriptorium must have proved that there's more to our legacy than meets the eye. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did, and she was my favorite person in the world for it. एक मिनट, यहाँ पे कोई मैं चेस्ट वेस्ट तो नहीं था जो मिस करके आया मैं, क्योंकि मेरा स्लॉट फुल था। नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं उस गेट पे। आई थिंक वो लास्ट गेट ही है अब। I spotted something ahead. Looks troubling. ओ भाई, ओके। The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. क्रूसियो, ओहो, अब ये तो हमें आता ही नहीं स्पेल। नॉक्टोजी का वो ही पड़ा हुआ है यहाँ पे। अरे कलेक्ट नहीं कर रहा, क्यों? Lumos. हाँ, आपके। अरे Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous. Revelio. I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. अच्छा, ये उनके स्केलेटन है। अरे एक मिनट, उन्होंने कुछ नोट लिखा था, वो नोट मुझसे मिस हो गया। ठीक है, ये है नॉक्टोजी का आखिरी नोट। I have lost hope. I'm locked in. I heard a scream and I saw the tortured faces. The only way forward is with an unforgivable curse. Even if I wanted to cast it, I have no one upon whom to do so. Salazar Slytherin created a malicious challenge indeed. In my last correspondence to my brother, I had invited him here. Now if he looks for me alone, I will have led him to his death. Despite our differences, I wish him no ill. I wish we had parted on better terms. अच्छा, दो बंदे चाहिए क्योंकि ये क्रूसियो जो ये है ना, ये किसी पे करना है। Oh shit. You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. अच्छा। My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the Ominous has the most experience with this. He should cast it. Oh, bhai You seem to be in saab। Ominous's favor. Will you ask him about this? ये भी तो पूछ सकता है, बट ये इसकी बातें बहुत ज्यादा। चलिए हम ही पूछते हैं। He ठीक है। does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous मान जाइए भाई। Ominous. अब इतना I यहाँ hadn't तक आए तो। imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. अच्छा। That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. Oh shit. If you cast Crucio, you will regret it forever. यार ये तो बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि अब यहाँ से हम निकल भी नहीं सकते। अब मुझे शायद सेबेस्टियन से बात करनी होगी। What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. सही बात है यार। It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio. Because I'm not sure I do. Ominous knows that,
yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctuagaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. सीखना तो ज़रूरी है गाइस। सीखेंगे और इसे बोलेंगे कि भाई हम पे तू कर दे भले, क्योंकि हम इस पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं करने वाला हूँ ऑप्शन, आई वॉन्ट टू लर्न द क्रुशियाटस कर्स बट यू मस्ट कास्ट इट ऑन मी। I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. शिट मैन, चलिए डार्क मैजिक सीखने का टाइम आ चुका है गाइस। चल बच गए, ठीक है। हमने क्रूशियल लर्न कर लिया गाइस, डार्क मैजिक। Ready? I'm ready. Crucio! गेट भी खुल गया। भाई साहब, बहुत ही दासू था ये। Are you alright? Yes, I'm fine. It was excruciating, but I'll survive. Let's keep moving. We made it. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're here. ठीक है, हमें अब इससे सर्च स्लिथरिन स्क्रिप्टोरियम। भाई साहब, Sebastian, ominous. There's a book just here. वो Found इनकी something. बुक। You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around. Revelio. भाई स्लिथरिन जी की बुक मिल गई तो सोचो हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। हाइलैंड स्कार्फ, डैम ब्रो, बहुत ही सही था यार, ये बहुत ही सही था। ठीक है, एक नोट है। I fear we shall never come to an accord. I cannot persuade even one of them to listen to reason. I had dared hope that Godric's thoughts were aligned with my own, that he understood why the caliber of students needed to be exceptional, but he has fallen prey to the ridiculous notion that Muggle-borns are somehow as capable as purebloods. He was furious when I expressed my displeasure at this thought on the matter, thoughts he had not yet put voice to. अच्छा हाँ, शायद स्लिथरिन वाले ऐसा मानते कि भाई प्योर ब्लड को ही लाइक मैजिक सीखना चाहिए। I tire of discord and can no longer bear witness to the corridors full of inept children masquerading as witches and wizards. हाँ, जैसा मैंने बोला था ना आपको। It is with heavy heart that I now know I must go from here. I shall place the creature into a deep sleep in its chamber until it can be awakened by one who shares my views, a descendant willing to reverse the damage that others have so carelessly wrought. One who shall rid the school of those unworthy of Hogwarts that would serve only to stain my legacy. और ये वो हॉगवर्ट्स वाले सांप की बात कर रहा है भाई, जो शायद जिनका ब्लड प्योर नहीं था उनको पत्थर बना देता था, शायद या मार देता था, ऐसा कुछ था। ओके, यहाँ पर शायद मुझे सेबेस्टियन से बात करनी है। What do you think? Looks like a spell book of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. Leave the scriptorium. ठीक है। Let's find a way out, please. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. पर कैसे? Of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. नहीं भाई, बहुत ही वर्दी था ये। यहाँ ऊपर कुछ है, शायद ऊपर से गेट वेट है शायद। हाँ, ये रहा। गाइस, हम लोगों ने क्रूसियो सीख लिया यार। अब गुंडों पर तो हम लोग यही स्पेल करने वाले हैं। Best news I've heard all day. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear right now
never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. ठीक है, ये तो हमने कर लिया, बढ़िया। और आई थिंक हमारा लेवल भी अब शायद अब होना चाहिए, प्लीज। थोड़ा सा रह गया, ठीक है। बहुत ही अच्छा मतलब ये क्वेस्ट था। हम लोगों ने क्रूसियो सीख लिया गाइस, और मैं ये दुश्मनों पे, गुंडों पे अप्लाई करने वाला हूँ। और ये कौन सा इम्पीरियो, टेम्पररी फोर्स एनिमीज टू फाइट एज एफ, और ये कौन सा है, अवाडा कडावरा किल्स एनिमी इंस्टेंटली। ये सीखना है मुझे गाइस, ठीक है। भाई साहब खतरनाक चीजें आती जा रही हैं। बॉम्बार्डा रख लेते हैं और ये रख लेते हैं। Ruben Brattleby must have nearly wet himself when you won every single crossed once battle. ठीक है, मेरा लेवल 21 होते रह गया गाइस यार, शिट। आज के एपिसोड में लगता है हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पर ठीक है, काफी सारी चीजें की हमने। एक आउटपोस्ट आया हुआ सेबेस्टियन का। अच्छा ठीक है, हम कर चुके हैं स्क्रिप्टोरियम के बारे में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म करते हैं। सीरियसली आज भी हम अपना लेवल 22 टच नहीं कर पाए। लेवल 21 ऑलमोस्ट खत्म है, कुछ और साइड क्वेस्ट कर रहे हैं जिसके बाद वो हो जाएगा। जो असाइनमेंट्स थे उसमें हमने मिस कोगावा जी का असाइनमेंट तो कर लिया, गार्लिक जी का असाइनमेंट भी शुरू कर लिया था, लेकिन मैं अब उसे अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि उसमें मेरे बहुत ज़्यादा फंड्स लग रहे हैं और ये जस्ट टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। मैं क्या करूँगा दोस्तों कि कुछ साइड क्वेस्ट करूँगा ताकि हम लोग अपने लेवल 22 को टच कर सकें और मेन क्वेस्ट की तरफ आगे बढ़ सकें। इसके अलावा दोस्तों सीरियसली आज हम लोगों ने अपना पहला डार्क मैजिक सीखा। अब जब भी कभी एनिमी से लड़ाई होगी, मैं इसका स्पेल को ट्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हूँ। इसके अलावा दोस्तों एक और डार्क मैजिक है जो कि है अवाडा कडावरा। ये कैसे ओपन होगा इसके बारे में मैं स्टडी करके आऊँगा अगले एपिसोड में, ताकि हो क्या पता हम लोग उसे ओपन कर पाए। चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करते हैं। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके प्यारे लाइक्स, आपके प्यारे कमेंट्स और आपके प्यारे सब्सक्रिप्शंस मुझे बहुत हिम्मत देते हैं ऐसे ही अपलोड्स करते रहने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब सभी लोगों से मिलूंगा अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।